ओके, थोड़ा सा 135 हो गया था ना, 136 करते हैं। डोमेन ऑफ y इक्वल टू कोसाइन इनवर्स ऑफ e पावर x इज द सेम एज रेंज ऑफ y इक्वल टू, तो इसकी रेंज क्या है ऐसे, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव x, राइट? तो स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, ये नेगेटिव x ऑब्वियसली पॉजिटिव उठेगा, बट या स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, तो वो जीरो से इन्फिनिटी तक जाएगा, बट नेगेटिव ऑफ दैट तो नेगेटिव इन्फिनिटी से जीरो तक, राइट? और डोमेन ऑफ दिस थिंग e power x में तुम, oh cosine inverse, right? So what you want is that e power x should be less than or equal to 1, right? या नेगेटिव तो हो नहीं सकता, पर इसको 1 से तो नीचे होना ही पड़ेगा, एंड that means it can go all the way from negative infinity to 0. So yeah, it's the same thing. So A is correct. So 136 का true है, A. And then what? Number of elements common in the range of function y equal to the inverse of signum of x. Range of this function. So signum of x, it goes, well, it's just negative 1, 0 और 1. ये तीन values है. तो tan inverse, yeah, negative pi by 4. तो जो अपना set है, that's just negative pi by 4, 0 और pi by 4. ये range है. Number of elements in the range of this function. Well, there's 3 elements basically. And wait, what? Is only one where signum not signum. Wait, what? No. Oh wait, common in the range. अच्छा ठीक है ठीक है. और ये जो रहेगा cot inverse of signum x. Well, yeah. So cot inverse goes from 0 to pi, and that means कि negative 1 पे uh, right, negative 1 पे ये pi minus pi by 4 यानी कि 3 pi by 4 पे जाएगा, and then 0 and then pi upon 4. Right, kind of weird, right? तो हाँ, दो एलिमेंट्स इसमें इनफैक्ट कॉमन रहेगा, because cot inverse of, wait, what? No, cot inverse of 0 is not 0. Shit. uh cot inverse of 1 is pi by 4, very correct. Cot inverse of negative 1 is 3 pi by 4, and cot inverse of 0, that's pi by 2. So yeah, in fact one element ही correct रहेगा. So B is also correct. C पे देखते क्या हो रहा है. C is the function y equal to signum cot inverse f, okay, cot inverse of x, and y equal to 1 are identical functions. Wait, what? Signum of cot, अच्छा, cot inverse of x, it just goes from what, 0 पे क्या होता है, 0 पे cot inverse की वैल्यू तो या वो infinite पे चली जाती है, right? So that's complicated, this is very complicated. So you cannot have a 0 in the range of cot inverse x. Similarly हमारे पास pi नहीं रहेगा, but the thing is कि सारे positive numbers रहेंगे उनके बीच के, and that means कि yeah, it's just y equal to 1 all of the time. राइट, और x में तुम कुछ भी पुट कर सकते हो ना, हर x की वैल्यू के लिए तुम्हारे पास में cot इनवर्स अवेलेबल है. दैट मींस यस, दीज आर आइडेंटिकल फंक्शंस, सो C वर्क्स. और ऑफ कोर्स तुम सिर्फ जब नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करोगे तभी cot इनवर्स थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, अदरवाइज नहीं यार, सब कुछ है अपने पास. नंबर ऑफ इंटीग्रल्स, सॉरी, नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द सॉल्यूशन सेट ऑफ, ओके, log base 2 tan inverse of x. Seriously. First of all, it's like 2 less than tan of x less than, sorry, tan inverse of x less than, well, 2 power to 4, right? ये दोनों inequalities identical in fact, but ये inequality identical नहीं है. So yeah, tan inverse of x. So think about it. Tan inverse of x, it goes from negative pi by 2 to pi by 2. ये तो मुझे positive दिख रहा है आपको, so obviously 0 to something, but 4 is like very huge. Pi by 2 is 1 point something. तो अगर 2 से तुम start कर रहे हो, that means कि इसमें कोई integers है ही नहीं. Like what? How can that be? Part 2 is 4, yes. What is this? हाँ, ऐसा कब होता है कि tan inverse of x is bigger than 2? Never, right? क्योंकि tan inverse goes from negative pi by 2 to pi by 2, pi by 2 1 point something है, तो वो 2 से बड़ा हो ही नहीं सकता. So no, there's no solutions for this actually. Wow, it's weird. So D is wrong. Okay, 137.
137 is the number of non-negative integral solutions of x1 plus x2 plus x3. Non-negative integral solutions, this is whole number solutions. Less than or equal to n. Come on, yaar. What is a हजार बार? Oh, less than or equal to n. Right, so it's equal like क्या क्या 1 2 3 चलते जा रहा है. इनफैक्ट जीरो भी चल सकता है, तो जीरो के लिए क्या एक सोल्यूशन रहेगा. ओके तो एक काम करो, k अगर रहा यहाँ पे, सो अपने को x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू k देखना है, देन कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं. It is easy, right? It's just k plus 2c2, right? So it's a summation from k equal to 0 because minimum 0 तुम distribute कर रहे हो and yeah and then till n of course. So 0 पे तो कोई मतलब नहीं बनता because actually बनता है in fact. It's just 2c2 and okay not that bad actually. So it's like 2c2 plus 3c2 चलते जाना है till n plus 2c2 and you know this is just n plus 3c3, right? Because this thing is like 3c3 or 3c3 plus 3c2 is just 4c3 and so on, and eventually you get n plus 3c3, right? So it's just n plus what 3 into n plus 2 into n plus 1 upon something else upon 3 factorial 6, right? Number of non-negative, okay, whatever. So n plus 3c3 and n plus 3cn, same stuff, right? So c works, a works, that's the only stuff that works. Nay, nay, yeah. So a and c. Next. इनफैक्ट अगर तुम n को पॉजिटिव नहीं भी रखते हो भी चलता, क्योंकि राइट मतलब नेगेटिव तो ऑब्वियसली नहीं बट नॉन नेगेटिव चल सकता था. नेक्स्ट, द इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल ड्रॉन टू द कर्व, दिस कर्व फ्रॉम सम पॉइंट इज r. ओके फ्रॉम सम पॉइंट नॉर्मल, ठीक है यार, नॉर्मल के जनरल इक्वेशन ढूंढो यहाँ पे. सो से एक्स नॉट वाई नॉट भी तुम नॉर्मल निकाल रहे हो, एक्स नॉट वाई नॉट इस पे लाई करता है, इस चीज पे पहले. सो इट्स लाइक y इक्वल टू वाई नॉट. y naught is just x naught square minus x naught plus 1 plus m. m के लिए अपन पुट करेंगे 2x naught minus 1, okay, times x minus x naught of course. So yeah, this is the equation of normal at any point x naught y naught जो कि इस पे लाई करते हैं, right? And 7/2 9/2, हाँ राइट, ये इस इक्वेशन ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं. दैट मींस 9/2 इक्वल टू, थोड़ा सा सिंपलीफाई करना चाहिए, या थोड़ा सा सिंपलीफाई करना चाहिए इनफैक्ट. just be x naught squared minus x naught plus 1 plus, okay, so 2x naught minus 1 times x, all right, minus 2x naught squared plus x naught. ये तो गया, it's just negative x naught square plus 1 plus 2x naught minus 1 times x. So मैं इसको सीधा से लिख रहा हूँ वापस, y equal to 1 minus x naught square plus 2x naught minus 1 times x. सब अपन रिलेट कर सकते हैं. That is our normal. और जो अपने points, that is 9/2 and 7/2. So 9 equal to 2 times of all this, so 2 minus 2x naught square plus, यहाँ पे 2 times नहीं है, 7/2 था. So 7 times this is just 14x naught minus 7. Cool. So yeah, 7 times 9 I think. Sorry, 7 plus 9. So just yeah, 16. 16 is equal to 2 plus 14x naught minus 2x naught square. So this should work I think. So just 2x naught squared minus 14x naught plus 14 equal to 0. In other words, x. Wait, is this correct? Yeah, I think it is, because it's gonna be 2 and that's 14x naught for sure. Okay. You just want to figure out what equations we have. But ये तो अपने को कुछ अजीब ही दे देगा, right? Because no, how can this be? 7 and 7, no. क्या हो रहा है मेरे साथ में? 16 right there, yes. Yes. Oh यार, क्या गलत हुआ है?
कम ऑन, क्या गलत हो रहा है इसमें? मैंने x को 7/2 पुट किया, इट शुड हैव बीन लाइक दिस। या इट वाज वेरी करेक्ट, ये 9/2 रहेगा। इसमें तो मुझे कुछ गलत नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स कि अपना ये तो भी पहले गलत हुआ होगा इससे। एक बार वापस कर लेते। सो y इक्वल टू x नॉट स्क्वायर माइनस x नॉट प्लस 1, क्योंकि ये y नॉट था, प्लस slope is just 2x naught minus 1 into x minus x naught, so this, and then minus x naught times this stuff, so minus x naught 2x naught square plus x naught, right? ये cancel हो जाएगा, so it's just 1 minus x naught square plus x into 2x naught minus 1. अब अगर मैं 9/2 अगर इसको पुट करूँ, so just 9/2 equal to 1 minus x naught square plus, so 7/2 times ये सारी चीज, मतलब कि क्या, negative 7/2 क्या, and plus 7/2 times x, like 7x naught like this. So x naught squared minus 7x naught plus, so okay, 9 plus 7 is 14, 14/2 is that, no sorry, 16, 16/2, that's 8, so 8 minus 1, that's also 7. Oh no, this is just bad. नहीं यार, ये अपने को रेडिकल्स में मिलने वाला है, दिस इज नॉट नाइस एट ऑल. ओह नो, अब मुझे समझा मैंने क्या गलत किया यार. ये अपन ने टेंजेंट ढूंढ लिया. ये अपने टेंजेंट ढूंढ लिया, यहाँ पे नेगेटिव 1/, चीज चाहिए थी. ओके, सो दिस इज ऑल जस्ट रॉन्ग, बट ठीक है ना, कर सकते हैं. इट्स जस्ट negative 1/2 x naught minus 1 and that times x minus x naught. अब ये करेक्ट रहेगा. So once again just gonna put 9/2 7/2 over here. Oh no, यार ये तो और बुरा हो रहा है, because no, this won't work here. This just won't work. ठीक है, इसलिए अपन ट्राई करेंगे. 9/2 equal to x naught squared minus x naught plus 1, और फिर यहाँ पे चलेगा 7/2 minus x naught, so plus x naught minus 7/2 x naught minus 1. So think about it, it's like what, plus 1, ये चीज पूरी क्या है, it's just 1/2 into 2x naught minus 7/2 x naught minus 1. You can definitely write this as, okay, so ये जाएगा minus 1 minus 6, so it's just plus 1/2 into क्या, 1 minus 6/2 x naught minus 1, right? In other words, 1 minus 3/2 x naught minus 1, that's what we are looking at. Oops, 1/2, right? ये चीज ये हो जाएगी. Cool. And then maybe we can multiply by, okay, whatever. So 9 minus 1 is 8, 8/2 is 4, so 4 minus 1 is 3, 3 equal to x naught square minus x naught minus 3/2 x naught minus 1. So 3/2 x naught minus 1 equal to x naught square minus x naught minus 3, right? So 3 is equal to x naught square minus x naught minus 3 into 2. So, right, this is just really bad, क्योंकि ये अपने को क्यूबिक वगैरह देने वाला है. दैट्स x naught के लिए सॉल्व करना इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल ओवर हियर. कोई और इजी तरीका है क्या? डज इट लाई ऑन दिस? अगर इस पे रहता एंड दैट केस अपन डायरेक्ट टेंजेंट ढूंढ सकते हैं, बट नहीं, दो टेंजेंट्स निकाल, सॉरी अपने को दो नॉर्मल्स निकालने, तो दिस वोंट वर्क लाइक दैट. बट एटलीस्ट इट्स अ पैराबोला, सो मे बी nah, won't work. Just have to do this thing. In fact, अपने को 3 normals मिलने वाले हैं, cause ये पैराबोला है. Oh shit. अपने को तीनों x नॉट वैल्यूज ढूंढनी पड़ेगी, और तीनों अपने को टैंक, मतलब तीनों इक्वेशंस ढूंढने पड़ेंगे. दिस इज जस्ट अ लॉट ऑफ वर्क. 3 equal to 2x naught cube minus 2x naught square. और कोई तरीका नहीं, क्योंकि तीनों इंडिविजुअल चाहिए, then it's got to be like that. Minus 6x naught minus x naught square plus x naught plus 3, I think. It's just what, 2x naught cube minus 3x naught square minus 5x naught plus 3. Hey, this cancels. Cool. At least that. Oh, okay, एक तो 0 ही मिल गया directly. So either x naught is 0, or you just have 2x naught square minus 3x naught.
minus 5 equal to 0. So बस में दो चीज़ें आ गई. Nice. And of course जो equation है वो तो अपन रखेगी. Right. So this is the equation that we want. और ये अपने conditions आ गए basically. Okay, cool. तो एक तो 0 है और इसके लिए अपने को फैक्टराइज करना पड़ेगा. 2x नॉट स्क्वायर माइनस 5x नॉट प्लस 2x नॉट माइनस 5. क्या क्या हो सकता है? 0, -1, 5/2. चलो देखते हैं. So 2x नॉट प्लस 1 भी एक बार का ढूंढ लेते हैं. 2x नॉट प्लस 1 क्या क्या होगा? It will be 1 and then let's see. -2 plus 1 is -1 and then 5 plus 1 6. और क्या क्या चाहिए अपने को? x नॉट स्क्वायर माइनस x नॉट प्लस 1. सो 0 के लिए तो ये जस्ट 1 हो जाएगा. -1 के लिए इट्स 1 plus 1 plus 1, right? It's 3. 5/2 is not that complicated. It's just 25/4 minus 5/2 plus 1. So 24 plus 4, right? It's going to be 6 plus 1, 7. 7 plus 1/4, and then it's just be minus, okay, 1/2 or kya ho jayega? 4, so it's going to be -2 like that. Yeah. 5 plus this thing. So 5 minus 1/4, which is just 19/4, I guess. So it's 19/4. Now let's do it. So पहला equation is going to be y equal to ये सारी कंडीशंस. So ये और ये अपने यूज करना, मतलब ये और ये ऑफ कोर्स. So 1 minus x minus x naught कितना है? It's just 0 anyway, so don't have to worry about that. Upon 2x naught minus shit minus बच्चे तो -2 कर दो ना हर जगह पे. So it's going to be -1 -3 and 4. So in this case यहाँ पे -1 आ जाएगा. That just makes this positive. So y equal to 1 plus x is one of the solutions. That just means x minus y plus 1 equals a. क्या कर रहा हूँ मैं? 138, right? So 138 का a is a solution. Otherwise और पे क्या? दूसरा, let's go for x not equal to -1. So y equal to, अपन ने इसके लिए कैलकुलेट किया था, it's just 3. So 3 minus 1 upon ये सारी गंदी चीज -3 आ जाएगा, and then x minus of -1, so x plus 1. So this will be 3y equal to 9 plus x plus 1. So x minus 3y plus 10 equal to 0, which is also there. So B is also correct. Okay, let's go for the other one. So last है x not equal to 5/2. So that's complication रहेगा, but yes, y equal to, तो पहले तो आपको चाहिए ये चीज जिस 19/4. Okay, then minus x minus x naught. So x naught is 5/2 upon 2x naught minus 1, which is 4. Whatever. So 8y equal to 38 plus 5, I think it's like 43, minus 2x, because yeah, remember 2x, correct. So 2x plus 8y equal to 43. That's the other one. So 2x plus 8y. So C also works actually. That's it. सिर्फ यही तीन चाहिए थे देखो. We are done. Okay, ये तो बहुत लंबा था. 139. So for 139, let f of x be equal to this and g of x be equal to this thing then. But seriously, max of f of t such that
0 इज बिटवीन, अच्छा ठीक है, तो पहले ग्राफ करो फिर मैक्स निकालो। गेटिंग इट। सो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3, हाँ, minus 6x squared is like 9. Oh, hey, that's nice. Yeah, maybe इसको पर इस टाइप से split कर सकते हैं. Maybe, just maybe. So like x into x minus 3 का square, then that minus 3 is that what we're saying. So what I'm thinking is कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, x minus 3 cube plus 3 into x minus 3 minus 3, right? और फिर मैं x minus 3 को t बोल सकता हूँ whatever. तो right, अगर मैं इसका डेरिवेटिव देखो just 3 इसको t बोल दो ना, तो 3t square plus 3, right? It's positive. Yeah, it's always, wait, what? It's always positive? It's always just increasing, huh? Yeah, because 3x square minus 12x plus 9 is like x square minus 4x equivalently plus ये हो जाएगा. Wait, no, that can't be. This doesn't make sense. What's this? How? Plus 3 right there. Is this minus 12 of course. तो minus 4x आ जाएगा. और यहाँ पे 3x वर्ग तो x square minus 4x. राइट, बट ये तो अपन स्प्लिट कर सकते हैं ना, जस्ट x माइनस 3 पे x माइनस 1. तो क्या क्या हुआ यहाँ पे गलत हमारा? 3t squared okay plus 3 श्योर, but it looks like it's positive. ऐसा कैसे होता है कि x minus 3 plus 3 and yeah that's all I did. What's a big problem for it? Look, मैंने यहाँ पे x कॉमन लिया, then it's just but यही तो आया था ना, 3x square minus 12x plus 9, and that's 3 into x square minus 4x plus 3, which is 3 into x minus 3 into x minus 1. Yes, but ये कुछ और दे रहा है अपने को. y was x into x square minus 6x plus 9 and then minus 3, and this was x into x minus 3 का स्क्वायर माइनस 3, इसको x minus 3 plus 3 लिखा तो just x minus 3 का क्यूब plus 3 into x minus 3 का स्क्वायर and then that plus 3. तो wait, what? It should be square over there. Sorry. Now it makes sense. Right, much clearer than that. But hey, whatever. Just go with this thing. ये सब करने की इनफैक्ट जरूरत ही नहीं है. तो इसका डेरिवेटिव इस टाइप का है. That means between 1 and 3 it's decreasing, right? So अगर मैं इसको ग्राफ करना चाहूँ इस क्यूबिक को, then 1 और 3 पे इसके मैक्सिमम मिनिमम आने वाले. ऑब्वियसली ये अपवर्ड है, राइट? ये क्यूबिक ऊपर जा रहा है, that means ये इस टाइप ऑफ चीज होगा. मैं वैल्यूज भी निकाल सकता हूँ ना, तो 3 पे क्या वैल्यू है इस चीज की? सीरियसली ओके, 1 और 3 पे कोई वैल्यूज चाहिए. सो 3 पे तो ये पूरा जो है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9 तो गया बस. यस, एंड देन इट्स जस्ट नेगेटिव 3. सो 3 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव 3 है इस क्यूबिक की, और 1 पे क्या वैल्यू है? इट्स लाइक 1 इंटू एक्स माइनस, सो 1 नेगेटिव 2 का स्क्वायर माइनस 3 विच इज नेगेटिव 4 minus 3 is 1, so positive, and that means yes, it's like this. इसके 3 रूट्स रहने वाले, of course. Okay, whatever. What we want is max of f of t when yeah, तो पहले तुम बोल रहे हो कि 0 to 3 में है, that means यहाँ से यहाँ पे, तो यहाँ तक till 1 तुम्हारा जो f of x है वही तुम्हारा max of f of t भी है, एंड आफ्टर दैट तुम्हारा मैक्स एक फिक्स नंबर हो जाएगा. तो अगर मैं इसको एक्चुअल मैच से लिखना चाहूँ, देन g of x is it's basically f of x when x is less than 1. it is यहाँ पे जो वैल्यू थी which was just 1, right? So 1 when x is
between 1 and 3, I think. Or finally whatever, and जब ये 3 से बड़ा रहेगा just 4 minus x, right? Okay, so let's try to graph this. First of all तो समझ तो गया कि इतना तो कर्व इसी टाइप का है, so इसको रहने देते हैं. Just want to read this thing, right? तो ये इस टाइप से जाने वाला है till that point, और उसके बाद में क्या है, it just goes 4 minus x, तो अपन 3 जब पुट करेंगे it's just 1, so it's continuous, cool. और 4 minus x is decreasing with slope -1, so yeah. Okay, तो अपने को क्या बोला, मैक्सिमम ऑफ g of x is 1, वेरी करेक्ट. मिनिमम ऑफ g of x is 0, ये यही तक डिफाइंड है ना, सिर्फ 4 तक, राइट? और ओके, सो इट स्टार्ट फ्रॉम 0 पे, तो ये पॉजिटिव है, सो यस मिनिमम इज इन फैक्ट राइट. 0 पे पॉजिटिव है ना, ये क्यूबिक 0 पे -3 है यार, पॉजिटिव थोड़ी ना है. सो ये थोड़ा सा गलत अपन ने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये अलग चीज बता रहा है. एक्चुअल में ये इस टाइप का है, बहुत ही एकदम स्टीप ग्राफ है ये. सो या 0 पे ये नेगेटिव है, दैट ओके. सो मिनिमम ऑफ g of x is 0. No, it's not correct. G of x is not differentiable at x equal to 1. Yeah, that's correct. G of x is continuous everywhere. That's also correct. So A, C, and D. Let's go to 140. If A and B are 2, 3 into 3 matrices such that their product AB is a null matrix, then mod A is not equal to 0 implies A must be. Oh, so AB is a null matrix. It's like AB equal to 0, right? तो डिटर्मिनेंट देख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ A टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ B शुड बी इक्वल टू 0. तो उनमें से कोई ना कोई एक तो 0 होगा. Determinant of A not equal to 0 means that just means B must be a null matrix. Wait, what? No, why? That does mean that the determinant of B is 0. Yes, but this how? What if it's not a null matrix? अगर वो रैंक 1 रहा फॉर एग्जाम्पल, B रैंक 1 है, देन वो क्या कर रहा है, वो सारे 3 डायमेंशनल स्पेस को इसे एक लाइन में कन्वर्ट कर रहा है, राइट? इंस्टेड ऑफ अ पॉइंट वो लाइन में कन्वर्ट कर रहा है, और फिर तुम उस पर A अप्लाई करोगे तो वो पूरी की पूरी लाइन बेसिकली एक सिंगल नो, तुमने 2-3 पॉइंट्स को एक सिंगल पॉइंट पे ट्रांसफॉर्म कर दिया A के थ्रू. दैट्स नॉट करेक्ट बिकॉज A का डिटरमिनेंट तो 0 है, सॉरी 0 नहीं है, राइट? That is just really bad. So B must be a null matrix. Yeah, of course. It has to be like that, right? Right. Similarly, यहाँ पे भी अगर determinant of B is not equal to 0, then तुम of course तुम B times जो भी वेक्टर तुम अप्लाई कर रहे हो, B जिस भी वेक्टर को अप्लाई करो, वो ट्रांसफॉर्म होने के बाद में वापस अपने को सिर्फ पूरी 3D स्पेस ही देगा, राइट? फुल. और फिर वो हर पॉइंट पे तुम A अप्लाई कर रहे हो और वो तुम्हें समहाउ 0 दे रहा है, हर पॉइंट, राइट? तुम्हें 0 दे रहा है. दैट ओनली मींस कि या इट्स अ 0 मैट्रिक्स. तो ये सारे पॉइंट्स तुम 0 पे लेके जा रहे हो, दैट मींस या तो A मस्ट बी द नल मैट्रिक्स. तो 3D स्पेस को स्क्विश कर रहे हो एक पॉइंट पे, इट्स अ रैंक 0 मैट्रिक्स. A is null matrix. So yeah, A and B both are correct, yeah. Yes. If none of A and B are null matrices, then at least one of the two matrices must be singular. I mean, of course, yes, that's very correct. If मतलब वो तो वैसे भी होगा ना, एक तो सिंगुलर होना ही चाहिए बिकॉज उसका डिटरमिनेंट 0 हो रहा है. Yes. If neither determinant A nor determinant B is 0, the given statement is not possible. Yeah, very correct. Yeah. So A, B, C, D all are correct. (141) क्या बोल रहे हो? रियल टू रियल एक फंक्शन दिया है. अच्छा, फंक्शन इक्वेशंस. Okay, f of 2 minus x equal to, oh wait, symmetric है about 2, huh? And also about 4 actually. Okay.
So 0 to 2 of f of x dx is 5 and wait, what 0 to 2 तो फिर obviously 2 to 4 भी सेम रहेगा क्योंकि 0 to 2 जो भी है वो सेम चीज 2 to 4 भी हो रही है राइट सिमेट्रिक then the value of wait what 0 to 2 जो भी हो रहा है सेम चीज 2 to 4 भी हो रहा है बट देन फिर 0 to 4 जो भी हो रहा है वो सेम चीज 4 to 8 हो रहा होगा oh you can just keep on going actually और फिर तुम उल्टा जा सकते हो wow this is very weird so from 0 to 50 of f of x is equal to right I think it's actually doable एक तरीका है कि मैं डायरेक्टली गैस करूं such that it actually works right मैं गैस कर सकता हूं दूसरा तरीका कि मैं कुछ अलग टाइप की प्रॉपर्टी यूज करूं so let's see what the pattern is तो f of x और okay f of x 2 और 4 दोनों के राइट दो पॉइंट्स के अबाउट ही सिमेट्रिक है ऐसा कब हो सकता है थिंक अबाउट इट ओके इसको इस तरह से ड्रॉ नहीं करते इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है यहाँ पे जो भी होगा f का वो सिमेट्रिक है अबाउट 2 राइट राइट और फिर ये क्योंकि 4 के अबाउट सिमेट्रिक है ये सेम चीज यहाँ पे भी रहेगी ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन है यार ऐसे लाइक साइन एक्स बोल दो और मतलब साइन का उसमें मॉडिफाइड फंक्शन ऑफ कोर्स बट ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं ऐसा नहीं है कि ये कोई स्पेशल चीज फॉलो करता होगा पीरियोडिक इज दिस फंक्शन सपोज्ड टू बी पीरियोडिक आई डोंट थिंक सो नो नॉट नेसेसरीली यार वेट व्हाट फोर के अबाउट सिमेट्रिक है प्लस वो 2 के अबाउट सिमेट्रिक है Come on, think. Look, अपन easily properties use ये दो properties exploit कर करके ये भी पूरा solve कर सकते हैं, but कोई इसमें अच्छा meaning है क्या? Deeper meaning. 2 point symmetry का क्या मतलब हो सकता है? I'm starting to think ये periodic होने वाला है, जैसे और कोई function नहीं दिख रहा है जो कि periodic ना हो और still 2 points के about symmetric हो. अगर ऐसा प्रूव कर पाया कि f of x equal to f of 2 plus x and basically we are done right because okay यहाँ पे period 2 का नहीं है that's a different thing but hey yeah you get the idea कि अगर ये periodic में प्रूव कर पाया then we are done ये दो प्रॉपर्टी यूज कर करके हाँ I think this works for everything okay this also works for say x plus 2 right then this would be negative x आ जाएगा यहाँ पे and is equal to f of 4 plus x but guess what f of 4 plus x is just oh okay it's actually very doable it's very doable right so मुझे सिर्फ f of x चाहिए so like f of x is equal to what f of x minus 2 plus 2 isn't that right we can of course write this as f of negative x plus 2 plus 2 and that's f of 4 minus x but guess what's f of 4 minus x it's f of 4 plus x ये पीरियोडिक ही होगा यार क्योंकि इन्होंने प्रूव ही कर दिया कि इसका एक पीरियड तो एटलीस्ट 4 है एंड इट डज लुक लाइक इसका फंडामेंटल पीरियड 4 है बिकॉज यहाँ पे 2 काम नहीं कर रहा that has to work it's a periodic function with a period 4 we are done मतलब ये जो पूरी गंदी सी चीज अपने को दी हुई है we just cut down everything so just integration of 0 to well right मैं 0 to 2 दिया है I get it but 0 to 4 अपने को exploit करना है through 0 to 48 जाएंगे so 0 to 48 f dx and then plus integration 48 to that so उसको मैं 0 to 2 लिख सकता हूँ right so 0 to 48 that's just 12 times 0 to 4 और फिर 48 to 50 that's 0 to 2 actually so yeah cool and then you can use the fact that it's actually just what 12 means from 0 to 2 f of x plus f of 4 minus x nice like what 4 minus x no
It's supposed to be 0 to 4. Hey, it's symmetric about 2 actually. Yeah. It's symmetric about 2 actually. Right. Well, first of all, 4 अपना period है, right? So that just means it's just negative x actually. Yeah, sure. So it's just f of x plus f of negative x. Now this is not the way to go. Uh, इसको थोड़ा अलग टाइप से करता हूँ, मतलब जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी से उससे नहीं हो रहा ना. सो विल से इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 f of x dx प्लस 12 इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 f of x dx. अब यहाँ पे मैं x को 2 plus t बोल सकता हूँ. सो जस्ट फ्रॉम 0 to 2 once again and then it's just 2 plus t. Okay, it actually doesn't make sense because this wouldn't make sense. Yeah, but still, come on यार, try करो इसको. dt. Oh, and then फिर अपन किंग प्रॉपर्टी आए ना, उसका नाम मुझे नहीं पता वो क्या है, बट सब लोग उसको किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, so मैं उसको यूज करने वाला हूँ. f of x dx plus 12 addition of 0 to 2 of. अब t की जगह पे मैं 2 minus t सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. इनफैक्ट 2 minus x सब्स्टिट्यूट कर देते डायरेक्टली, बिकॉज डमी वेरिएबल, फर्क क्या पड़ता है. सो नो 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 नो, दैट वुड जस्ट गिव अस 4 minus t. नो ना, ये सेम चीज दे रहा है. Ah, there's got to be some way. Hey, f of 2 plus t, isn't that the same thing as f of 2 minus t? And then फिर वहां पे तुम t की जगह पे right f of 2 minus t and then t. I just know ये सिमेट्रिक है तो उसको मैं 2 times लिख सकता हूँ. We know that, but मुझे प्रूफ करना पड़ेगा. So अब मैं t की जगह पे 2 minus t पुट कर सकता हूँ, 2 minus x whatever you prefer, और ये हो जाएगा exactly f of x dx. So it's pretty much just 24 integration to 2 of f of x dx, और यहाँ पे एक बचा हुआ, so 25. And guess what? This completing is just 5, right? So it's 125, 141 का a. So in fact, yes, अगर इसमें 2 point symmetry है तो अपन ऐसे एक्चुअली प्रूव कर सकते हैं कि पीरियोडिक रहेगा. मैं इस पे करूंगा, मैं इस पे बाद में कुछ लिखूंगा और उसका वीडियो बनाऊंगा. Yeah, because it's worth investigating. Okay, तो एटलीस्ट a तो ट्रू है, क्या हो रहा है इसको, राइट? एग्जैक्टली. एंड oh यार ये सब क्या है? ओके, -4 to 46 f of x. Okay, so -4 to 46, that's like 0 to 4 दोनों साइड ऐड कर दो. It's just 0 to 40, sorry, 0 to 50 basically. Hey, it's the same thing. So yes, b also works. So a works, b works. Similarly यहाँ पे तुम okay 1. Now that might be different actually. 2 to 52. Look, period. We just kind of proved कि ये, हाँ, in that case maybe it's actually doable. So it's just yeah, it's periodic, right? So 2 to 52 is the same thing as like 0 to 52, and I get it. Good thing if 0 to 52 is just some multiple of 4. So it's like 1 and then 12, so 13. 13 from 0 to 4. Right, of course, of f of x dx plus actually not plus, minus integration from 0 to 2 of f of x dx, right? And then we just know it's 26 into 5. This is -1 into 5, so it's 25 into 5 once again. So it's also 125, so d also works. I'm not sure कि c work करेगा कि नहीं करेगा. I don't think ये correct है. Okay, so we can try to do it. So d works, okay, and c का I don't think c will work, but still, so 1 to 51, हाँ, like तुम 1 to 4 जाओ और उसके बाद में नहीं, अच्छा 1 to 5 जाओ और फिर तुम 5 to, right, maybe that could work. So it's the same thing as the integration from
कितने इनफैक्ट, सो 1 to 5 देन 5 to 9 चलते जा रहे हो, कितने रहेंगे? सो 50 अपॉन, ओ गॉड 50, नो नो, यार 0 to, इसमें थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा अलग है, राइट? सो इट्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 50, okay, plus integration from 0 to 50, sorry, from 50 to 51, and then minus integration from. सो द थिंग इज कि क्योंकि अपन ने प्रूव किया कि उसकी सिमेट्री की वजह से वो एरिया भी सिमेट्रिक आ रहा है, या तो लाइक 0 to 4 जो है दैट्स 2 times ऑफ, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग इनफैक्ट अपन इस चीज को डायरेक्टली 0 to 1 लिख सकते हैं, और फिर इट्स जस्ट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एनीवे. सो वाओ वाओ, रियली दिस आल्सो वर्क्स आउट फॉर सम रीजन. Oh yeah, this does work out, huh? Yeah, I mean, okay, I get it. तो 0 to 50 जो भी था, तुम इसके उसको तुम 2 के इंटरवल्स में बांट सकते हो, क्योंकि यू नो कि 0 to 2 जो भी हुआ होगा सेम चीज 2 to 4. आई नो सेम फंक्शन नहीं, बट ओके सेम फंक्शन वैल्यूज नहीं, बट एरिया सेम था, राइट? सो यू कैन जस्ट कीप ऑन गोइंग लाइक दिस, और फिर क्योंकि तुम 1 पे शिफ्ट हो गए, यू कैन आल्सो शिफ्ट ओवर हियर, तो समथिंग लाइक दिस, आई डोंट नो. और यहाँ पे जितना भी ये एरिया था, राइट, तुमने वो हटा दिया, बट एट द सेम टाइम तुम सेम काइंड ऑफ एरिया यहाँ पे वापस इस्टेब्लिश कर रहे हो, एंड दैट नो 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 वेट, दिस इज रॉन्ग. ये दोनों एरिया सेम थोड़ी ना यार, ये तो छोटा है इससे. ओके, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, सी इज नॉट करेक्ट. ये अपन ने कुछ तो भी इसमें गलती की है ऑब्वियसली. सो ये 50 to 51 था, राइट? वी नो ये पीरियोडिक है एंड एवरीथिंग, सो you can like go from 48 plus 2, so 2, and then 48 plus 3, so it's from 2 to 3, right? It's okay, which is yes, it's no, okay. ये right area इस टाइप से एरिया पीरियोडिक नहीं है इनफैक्ट. ओके, दिस बिकॉज ऑब्वियसली तुम देख सकते हो ना कि ये एरिया और ये एरिया सेम नहीं होगी, then right it doesn't make sense. So it's not correct, C is not correct, all other are, so A, B, D. Next is 142. Two events A and B are such that the probability that at least one of them occurs is 5, 6, and both of them occurring simultaneously उसकी probability 1/3 है. Venn diagram draw करो, सेम चीज है, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करते हैं. Okay, A and B दो events है such that the probability that at least one of them occurs is at least one of them, यानी कि उनका जो union है that occurs, that is 5/6. So A union B, इसकी probability क्या है? 5/6, and both of them occurring simultaneously, मतलब कि intersection B, that's 1/3. तो ये पूरा 5/6 है, ये पूरा 1/3 है. The probability of, okay, if the probability of not occurrence of B is 1/2, मतलब कि probability of occurrence of B is also 1/2, तो ये पूरा एरिया जो है B का that's 1/2, और intersection की तरह 1/3, so it should be 1/6 like that. 1/6, and this is 1/3 because yes, 1/2 minus 1/3 is 1/6, very correct, right? And उन्होंने कहा है कि both occurring की probability कितनी थी? 5/6. So this is like 3/6 already हो चुका है, so 2/6, that's 1/3 is over here. Done. Then A and B are equally likely. Look, ये पूरा 2/3 probability है, और ये नहीं है सेम, तो नहीं, A is wrong. Yes, 3/6, फिर यहाँ पे 2/6 percent चाहिए, that's 1/3. Okay. Probability of A given B. So given B, probability of A, that's just 1/3 upon okay, 2/6 upon 3/6, this is 2/3. So C is correct. 142 का C correct है. B क्या है? A and B are okay. Once again, I don't know तुम क्या बोलना चाहते हो, but मुझे इनफैक्ट ये टर्मिनोलॉजी सर्च ही कर लेनी चाहिए. So yes, whatever. 3 times probability of A equal to probability of B. Okay, the probability of A is 2/3, which is like 4/6, and then that upon probability of B, which is
3 upon 6, right? So it's 4 upon 3. Well, yeah, that's correct. So D also works. Okay, cool. Next, 143. Let a variable line L be such that the algebraic sum of its perpendicular distances from 3 points is always 6 units. Okay? Algebraic sum of its perpendicular distances. Acha, theek hai, I get it. Right. The line will always touch a fixed circle. Usually following is correct about this circle. Mhm. So perpendicular distance from 3 points, that's always 6 units. Let's say वो जो line थी, that's just ax plus by plus c equal to 0, then essentially what you're saying is key. Oh, and the line will always touch a fixed circle. What? It's a tangent to a fixed circle. मतलब इसका distance from a fixed point is always constant, right? Perpendicular distance. Hey, that's actually very doable. Yes. So yeah, this is the line. Then जो अपने ये points रहेंगे 2, 0, whatever. So a times of 2 plus 2 plus 2, that's 6a. So 6a plus come on, and then for b के लिए क्या जाएगा 0, 1, 2 is just 3b, and then plus 3 times of c क्योंकि t c of course, and that upon square root of a square plus b square. This is actually the perpendicular, right? This is equal to 6, right? So hey, that's nice. This means like 2a plus b plus c upon square root of a square plus b square is what? 2. Nice, done basically. So just 2,1 से so 2,1 से इसका जो डिस्टेंस रहेगा ये लाइन का वो क्या है? यही चीज है ना, और दैट्स ऑलवेज अ कांस्टेंट, इट्स जस्ट ऑलवेज 2. so 2,1 सेंटर है. ये क्या हो गया? सॉरी, हाँ 2,1 एक सेंटर है और उसका रेडियस क्या है? 2. सेंटर लाइज एट 2,1. वेरी करेक्ट. रेडियस इज 2 यूनिट्स. यस. इसको मैं ड्रॉ करना चाहूँ क्या हो रहा है? So 2,1 something like this, और radius 2 है, so this will go like that. इस टाइप से सर्कल रहेगा. So yes, a tangent is also just the y-axis. Tangential to y-axis, very correct. Intercept क्योंकि x values same आ रही है, right? Yeah. Intercept on x-axis is 2 square root 3 units. So ये चीज, right? Look, ये distance 1 है and this thing is 2, so then this has to be square root 3. So yes, it's 2 square root 3. So D works, C works, सारी काम कर रहे हैं. A, B, C, D. 144. Let f from real to real defined by f of x equal to cosine inverse of negative. Okay, whatever. Fractional part. Which of the following is or are correct? F is many one but not. Okay, यार ये बहुत easy है. So first of all, ये चीज तो periodic है, तो अपन directly बोल सकते हैं it's many one, and this is a even function. अगर तुम इसमें negative x put कर दो इसका भी, yeah, तो क्या fraction part of negative x? Cosine inverse of negative. Look, fractional part किसी भी चीज का हमेशा positive रहेगा and is less than 1. That just means this is actually just pi minus cosine inverse of the fractional part of negative x, right? That's what this function is, and yeah, it looks very similar to something. And anyway, और ये हमेशा तो पॉजिटिव, यहाँ पे स्क्वायर क्यों आखिर मैंने क्यों किया ये? अच्छा, ये सिर्फ ब्रैकेट था. So it's an even function of no, something's wrong about it, क्योंकि of course ये नहीं हो सकता ना. तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देखोगे तो इट्स लाइक दिस 1 तक और ऐसा है, देन ये ऑब्वियसली इवन नहीं क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है वो वैल्यू सेम नहीं है. सो फ्रैक्शनल पार्ट तो इवन फंक्शन नहीं है, एंड दैट मीन्स कोसाइन इनवर्स ऑफ वो चीज वो भी अलग अलग दो वैल्यूज देगी, एंड या सो इट्स नॉट एन इवन फंक्शन. सो ए वर्क्स. रेंज ऑफ एफ कंटेन्स 2 प्राइम नंबर्स. रेंज ऑफ एफ, सो pi to pi by 2 में रहता है ये, राइट?
when this fractional part becomes 0, which it can become, this right cosine inverse of 0 हो जाएगा. That is just pi by 2. So pi by 2 is included, but pi is not, because ये चीज 0 कब होती है? Well, that happens when fraction, ये जो पूरी चीज रहेगी, that becomes 1. But no, fractional part can never become equal to 1. Then it's pi by 2 to pi. But वैसे भी ये irrational है, तो फर्क क्या पड़ रहा है? So pi by 2 is 1.7 something, whatever, we don't care. So 2 and then ये 3 point something है. So 2 and 3, they are in there, and yes, these are prime. So D is correct, A is correct, F is aperiodic. No यार, it is periodic. क्या था ये? Graph of F does not lie below x-axis. Yeah, I mean, of course, cosine inverse है यार, वो हमेशा positive रहता है. So what are you talking about? So D works, C doesn't work, B works, and A works. So A, B, D. Let's go for 145. 145 is if these ellipses be described, then what? Okay, so B variable. Then for all values of P, the tangent at one end of the lattice rectum passes through. One end of the, okay, I'm getting it. It passes through. What? Seriously? So lattice rectum के coordinates क्या रहेंगे? Well, first of all, A, right? So no, AE. Even more complicated. Yeah. So वो tangent, it always, यार तुम्हारा जो focus है वो भी change हो रहा है ना continuously. This is the worst thing ever. It always passes through. करना ही पड़ेगा ना, normal का ऐसे. So ठीक है. What's your a squared e squared thing? It's just 4 minus b squared plus, yeah, 4 minus b squared. So ये जो रहेगा, let's just talk about the positive focus. So you take a square root of 4 minus b squared. Oh no, wait. अगर मैं b की वैल्यू को चेंज करना शुरू करूँ, अगर वो 4 से बड़ा होने लग गया, this is problematic. नहीं यार, shit. तो जब ये 4 रहेगा, in that case lattice rectum दोनों, ओके, उसकी सेंट्रिसिटी 0 हो गई. सो सेंटर ही तुम्हारा फोकस बन गया. That case, this type से will start becoming really bad. यार ये तो सही नहीं हो रहा है. Square root of 4 minus b square. ठीक है, अगर b square 4 से छोटा है, then talk about it. Okay, and then in this case it would be दो pieces करने पड़ेगा अपने को. This is just bad. ये एक पॉइंट रहेगा, उसके अलावा कुछ और तरह से नहीं कर सकते ना. प्रॉब्लम वही है कि जो फोकस है वो चेंज हो रहा है कंटिन्यूस. वी हैव नो अदर वे. ओके, और उस पॉइंट पे उसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? दिस इज द वर्स्ट. सो x squared upon 4 और वो सारी 2b squared upon e, just know it. So 2 times of b squared वैसा ही upon a is 2, right? So this is b squared, right? So yeah, sorry, not 2b squared upon a, just b squared upon a. 2b squared upon a पूरी तरह से उनकी लेंथ है, अपने को सिर्फ y कोऑर्डिनेट चाहिए ऊपर वाले पॉइंट का. So it will just be b squared upon 2 this case, plus minus whatever, we don't care. So the thing is कि जो tangent रहेगा, that will just be x upon 4 square root of 4 minus b squared. प्लस माइनस डाल ही देते ना, प्लस माइनस y b squared upon 2 and then also b squared, so just y squared upon 2 actually. That's equal to 1, ऐसा बोल रहे हो. Well, clearly जब तुम b को एलिमिनेट कर, so 0 का plus minus 1, right? 1 end of the lattice rectum passes through. अरे यार कौन सा एंड? पॉजिटिव वाला एंड, नेगेटिव वाला एंड? आई डोंट नो. तो अगर ये पॉजिटिव वाला एंड है, देन y will be 1
right? It always passes through 0, 1. अगर ये नेगेटिव वाला है 0, negative 1, so right, what क्या हो रहा है ये? Oh, sorry, upon a, right? So b squared upon a, that is 4 right there. No, it is in fact just 2 because a is what's going on? क्या गलत हो रहा है इसमें? हाँ, x equal to 0, y equal to, sorry, 2 यार मैं क्या कर रहा हूँ आज? So yeah, this works perfectly. और इसमें y कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं. So अगर b स्क्वायर 4 से बड़ा होता है, दैट इज फोकस चेंज हो गए होते एंड इट वुड बी कि तुम राइट, एंड दैट वुड नॉट मेक सेंस एक्चुअली. स्टिल अगर b स्क्वायर बड़ा है देन थिंग वुड बी कि तुम्हारा y कोऑर्डिनेट जो होता है दैट वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ जो फोकस के जो y कोऑर्डिनेट होता स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 एंड देन ऑफ कोर्स जो तुम्हारा लेंथ रहती latest vector again, just 2 b square point 2 times of 4 in this case. What a is b, so yeah, but अपने को लेंथ नहीं चाहिए, इसका सिर्फ आधा चाहिए. So 4 upon b, और फिर इस पॉइंट पे अपने को ढूंढना है कि क्या रहेगा. दिस इज जस्ट वेरी वेरी बैड. नहीं, तुम b को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे इस टाइप से, राइट? सो सिर्फ a और b करेक्ट है. Yeah, next. 146. Let f of x be equal to this, okay, 1 upon x square root of x sin, okay, whatever. अपने को क्या सिर्फ f dash का देखना है ना, तो फिर f dash of x पहले तो निकाल लो. f dash of x is, so क्या वो Lengthen's rule, whatever. So क्या बोलता है वो, it just says it's like 1 upon square root x to x square of इस अंदर की चीज का डेरिवेटिव, राइट? नो या वो तो 0 हो जाएगा नहीं, बिकॉज अंदर की चीज में x है ही नहीं. सो द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इन फैक्ट होना चाहिए अंदर की चीज का पार्शियल डेरिवेटिव. और then it's just what it is sine of the t square, so sine of x, right, minus sine of once again t square 1 upon x square, right? This is the derivative. Oh, of course, that times जो square root x का derivative था, so 1 upon 2 square root x and then 1 upon x derivative just negative 1 upon x square, so positive, and then 1 upon x square like this. Cool. So sine x upon 2 square root x plus sine of 1 upon x square upon x square. Cool. That is our derivative. Now what we want is f dash of 1. Wait, okay, what is this thing? पहले ये दोनों कर लेते हैं. Limit as x tends to 0. This is bad. As it tends to 0, यार ये जो square root x and this thing is approximately x, so it's square root of x actually, right? So it approaches 0 as well. ठीक है. And what about this thing? So as x approaches 0, this thing approaches 0, but 1 upon x square approaches infinity. Okay, it's not defined. More like not defined से अच्छा बोला चाहिए मुझे कि हाँ ये not defined ही है, क्योंकि ये प्लस माइनस इन्फिनिटी डेविएट कर रही है. Not defined. Okay, so this is not 0. No. Limit as x tends to infinity plus infinity, whatever. f dash of x. Okay, so as this tends to infinity, ये चीज तो finite है, ये भी चीज finite है. That just means कि yeah, it approaches 0. Very correct. So C is correct. और फिर अपने को चीज है f dash of 1. So f dash of 1 is the sine of 1. What? Sine of 1 upon 2 plus sine of 1. Well, that's 3 upon 2 sine 1. So it's going to be D. D is correct and C is correct. So C and D. Cool. Next. 147. Okay, let f of x be equal to this integral 1 to x of. Okay, so अच्छा अपने को देखना है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है क्या. वेट, सॉरी, व्हाट अबाउट दिस थिंग?
f of x plus pi by 4 is... Okay, this is weird. It's less than 3. Okay, what? Tan inverse of x. So it starts from 1 to x. Wait, what? Okay, क्या x okay, x bigger than 0, cool, but तुम 1 से start करोगे, x shouldn't be bigger than 1. Okay, तुम negative, right, तुम उल्टा भी जा सकते हो ना, 1 to something less than 1. Fine. Then wow, this is getting complicated. पहले तो मुझे इसको proper टाइप से इंटीग्रेट करना पड़ेगा. In itself a very bad task. ये काम नहीं करेगा. Well, one thing we know is कि ये चीज positive है. That means as x increases, your f of x also increases. So f of x is by default an increasing function in x. Then okay, if alpha is less than beta, then of course f of alpha should be less than f of beta यार. So a works. 147 का a तो correct है. अब अपन c और d देखते हैं. For all x bigger than 0, f of x plus pi by 4 is less than tan inverse of x. What? Tan inverse of x minus pi by 4. X is bigger than 0. Oh hey, I think I know what you are trying to do. So तुम क्या बोलो? But let's just do this thing कि नहीं तो अपने को इनफैक्ट उससे थोड़ा ज़्यादा लगेगा कि not good. But still, 3 power 0. 3 power 0 is 1, and then anything bigger than 0 that just gives something bigger than 1. So it's actually doable, not that hard. So this thing, f of x is bigger than integration from 0 to x. In case x 1 से बड़ा है, then you just have it's bigger than 3. तो वो और strict हो जाएगा, but वैसे भी it's actually very doable. So it's from 1 to x यार. 1 to x of 1 upon 1 plus t square dt. So that's just tan inverse, right? So it's bigger than tan inverse of t. It goes from 1 to x. So tan inverse x minus tan inverse 1 pi by 4. That's why f of x plus pi by 4 is bigger than tan inverse of x. So d should be correct. 147 ka d. 148. A ray of light traveling. अरे यार एक घंटे से ऊपर हो गया. Whatever, I'll see you in the next video. Bye.